कौन 278. सा लेगा अभी नेक्स्ट? 278. 278। Clueless Limited. प्लस। Prepare corrected version of Clueless Limited corporation tax computation for the year ended 31st of March 2023 should indicate by the use of zero any items in computations of trading profit for which no adjustment is required. Corrected version में हमने मतलब इन्होंने wrong version बना के दिया, तो हमें चालू प्रोग्रेस है 4,71,92 पे करना पड़ेगा. फिर स्टार्ट. There you go. Trading profit computation of corrected version of Clueless Limited. Version of Clueless Limited. Corporation tax ही बोला हमने. Corporation tax liability ये दो तरीके के हैं. और बॉक्स प्रॉफिट.
लोन इंटरेस्ट रिसीवेबल, जो जो रिसीवेबल होता है हम वैसे का वैसा उसको लिख देते हैं। लोन इंटरेस्ट, तो ये सिंपल एडजस्टमेंट है इसलिए इसको सबसे पहले डाल देता हूँ ऐसे ही लिख के। फिर आती है बात इन सब चीज़ों की, तो मुझे लगता है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन तो हमें सामने से दिया गया है। लेट्स मेक नो मिस्टेक इन टाइपिंग। डेप्रिसिएशन 15,740। प्लान रिटेनिंग 400 रुपये लगता है चलता है। प्लान रिटेनिंग इज नॉट अलाउड, इसलिए इस चीज़ को ऐड किया गया है। लिटरली इज नॉट अलाउड, इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे ऐड किया गया है। ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट यानी कि हम सबसे पहले एक एडजस्टमेंट करके रख रख देते हैं। वो है क्यूसीडीज का, प्लस क्यूसीडीज नौ सौ, दिस माइनस दिस, gives to customers portal का power banks displaying clueless limited's name, this 10। तो उसके नीचे मुझे नहीं पता इसको क्यों डाला है हम लोगों ने, जीरो आएगा। ये चॉकलेट फूड आइटम है, नहीं अलाउड है। क्या कैपिटल को हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, हमें ऐड नहीं करना है, हमें माइनस करना होता है। डिविडेंड रिसीव्ड, हमें उस चीज को फर्क ही नहीं पड़ता। हम चार्जेबल गेन को बढ़ा सकते हैं, सबसे पहले वो कर लेते हैं। तो चार्जेबल गेन्स, the gain relates to sale of building to an unconnected party for 2 lakh, proceeds 2 lakh. The office had been acquired by Clever Limited for 70,000. Building, okay, the office had been acquired by Clever Limited for 70,000 on a 100% subsidiary. ठीक है, Clever Limited had sold the building to Clueless Limited on 1st of June 2011 for 1,50,000, which was the market rate। लेकिन दिस इज 100% सब्सिडरी, तो इनका एक ग्रुप होगा एक दूसरे के साथ। तो मुझे लगता है जिस कॉस्ट पे हमने लिया था ना वही आएगी। जिस कॉस्ट पे क्लेवर लिमिटेड ने लिया था ना, मुझे लगता है वही आएगा 7। और उन्होंने क्या किया ऊपर, उन्होंने ऊपर लिखा है 50,000 ना। आई थिंक दैट्स रॉन्ग, बिकॉज लेस कॉस्ट at which it was acquired by the subsidiary। प्रॉब्लम ये भी है कि इन्होंने बोला नहीं है कि ये ग्रुप में, मतलब ये ग्रुप में बन आते हैं कि नहीं आते हैं, सो दैट कैन बी अ डाउट। अंडरस्टैंड दैट, वो बाद में चेक कर लेंगे एक बार, तो हम वो और कोई अमाउंट तो पता चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेशन का, फिर ये भी होगा रहता है लास्ट, कैपिटल अलाउंसेस। हमें पूरा ही मतलब वापस बनाना है, तो ऐसा वो डिफरेंस का कुछ चीज है नहीं यहाँ पे। इनपुट स्पेशल रेट, इनपुट इज 12,400, स्पेशल पूल का ओपनिंग was 13,500। The car has a CO2 emission of 145 grams per kilometer. This car is used by sales manager 50% of this mileage for private journeys।
एक मिनट, ये इंडिकेशन फैक्टर्स क्यों दिए हैं फिर? मुझे लगता है ये इंडिकेशन फैक्टर्स हमें इस चार्ज में यूज करने हैं। ओ, वेट, ये हमने इंडिकेशन फैक्टर्स नहीं देखे थे। We'll just put control X in this V here. Gains related to sale of building for 20. Okay, that's okay. The office has been acquired by Clever Limited for 70,000 on 1st April 2003. सेल कब किया था? 1 March को। तो April 3 से March 3 तक देखिए इतना ही, so it means it is 0.535। Indexation allowance 0.535। The problem is मैंने आपको बोला नहीं है कि ये do they form a part of the group or no? They haven't said that। बस बोला है कि 100% सब्सिडरी है। डील किया था यार इसमें। Let's do one thing, let's take cost of acquisition as 1,50,000, cost at which sold to subsidiary। ठीक है, let's do this thing। इंडेक्सेशन अलाउंस के लिए रुक जाते हैं थोड़ा सा। Clever Limited has sold the building to Clueless on 1st of June 11। हमने 1st of June 11 को ये चीज बेची थी, तो वहां से हम इंडेक्सेशन चार्ज करेंगे 0.182, या आता है 2270। लेट्स टेक दिस एज आवर चार्जेबल गेन नाउ। रॉन्ग होगा तो बाद में चेक कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है ये आंसर हो सकता है। अभी के लिए वापस लेट्स गो बैक टू कैपिटल अलाउंस, क्योंकि बस कोई इंडेक्शन अलाउंस दिख गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि चार्जेबल गेन इतना सिंपल तो नहीं होगा। सुपर डिडक्शन यहाँ तक हो गया, एआई नहीं मिला, सुपर डिडक्शन मिलेगा तो वो तो निकल जाएगा। ये क्या बोल रहा है, 140 का। All of the items included in the special rate pool at 1st of April 2022 were sold for 9,300 during the year and 31st of March 23. The original cost of these items was 16,200। But एक कंपनी बंद हो रही है क्या? नहीं, कंपनी बंद नहीं हो तो बैलेंस अलाउंस इन्होंने यहाँ पर डाला, मुझे नहीं लगता बैलेंस अलाउंस आएगा। लेस डिस्पोजल प्रोसीड्स। सेल्स मैंने 50% यूज किया, दैट्स नॉट आवर कंसर्न। टोटल हम इसका ले लेंगे। WDA WDA जो भी चार्ज होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो ऑल ऑफ द आइटम्स भले ही बोला है लेकिन बैलेंस बच रहा है। एंड द पॉइंट इज कि लाइक इट्स नॉट इवन क्लोजिंग, तो मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। और बहुत ही फालतू फिगर आया एक्चुअली आंसर में, बट ठीक है, लेट्स लेट्स चेक लेटर। ओ नहीं, सॉरी, दिस इज WD, TTWDV। यहाँ पे नहीं आएगा वो। TWDV कैरी फॉरवर्ड, बिकॉज इस आंसर में बेसिकली उन्होंने वर्किंग नोट का एक रेफरेंस 100% मांगा होगा, इसलिए हमें प्रेजेंटेशन थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा।
हाँ, यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है, मुझे लगता है अभी ये बढ़ गया होगा तो ये ऐड हो गया है, ये नेगेटिव में जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, तो मेरे हिसाब से द आंसर शुड बी 75,566। हाँ, खिचड़ी माइनस किया हुआ है, माइनस किया हुआ है, चार्जेबल गेन्स में इंडेक्सेशन चार्ज किया हुआ है, लोन इंटरेस्ट रिसीवेबल ही सिर्फ शो किया है और कुछ नहीं आता। द लोन वाज प्लस इट वाज मेड फॉर नॉन ट्रेडिंग पर्पसेस, अगर ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए होता तो शायद हम जीरो भी दिखा देते, दैट्स फाइन। अच्छा, इनका 1,10,000 आया था, हमारा 75,566 आया है, मेजर गैप है, पर चेक कर लेते हैं। नो, आंसर 88,000, कम समवेयर इन द मिडिल। चार्जेबल गेन इज 62, सॉरी 92,603, यानी कि भले ही इन्होंने यहाँ पे बोला नहीं था बट इट वाज अ पार्ट ऑफ द सब्सिडरी ग्रुप। पक्का यही रॉन्ग होगा मेरे हिसाब से, बट विल जस्ट चेक इन द क्वेश्चन। 70,000 and then indexation factor on this 70,000, 0.298। नेक्स्ट सेकंड का आंसर क्या आता है? चार्जेबल गेन्स 70,000 प्लस टू, 20,860। ओके, डीम प्रोसीड। हाँ, इंडिकेशन अलाउंस, राइट राइट राइट। चार्जेबल गेन्स completely wrong है। We have to multiply this figure with 0.182, however यहाँ पर जो फिगर आता है that is actually deemed cost, so that means they do form part of the subsidiary group even though they have not said। लेकिन deemed cost, ये deemed cost ढूंढते कैसे हैं, वो उसका एक फॉर्मूला है। Acquisition plus indexation, cost of acquisition is 70,000। अभी इंडेक्सेशन कॉस्ट विल बी फ्रॉम 70,000 टू द डेट ऑफ सेल, हमने उसको बेचा था जून 11 में, तो अप्रैल 3 को हमने एक्वायर किया था जून 11, तो 0.298। तो यहाँ पे जो फिगर आएगा दैट इज दिस प्लस दिस, यानी कि इट्स एज गुड एज द डीम कॉस्ट का फिगर। से हमने माइनस किया वो फिगर को, एंड देन इंडेक्सेशन वी हैव टू चार्ज ऑन ऑन द डीम कॉस्ट एज 0.182, कि इस डेट को हमें मिला था, जून 11 को हमें मिला और हमने बेचा 23 में। If we do that, then that's the only mistake we have made. And then the answer, which is 88,848. 88,848. Okay. So thank you for watching, guys, and bye.